It's not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich thing. नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे चैप्टर टिश्यू के होंगे, और जो क्वेश्चंस हम लोग ने लिए हैं एनसीईआरटी बुक से लिए हुए हैं और एनसीईआरटी बुक के मिडिल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको कहीं मिलने नहीं वाले, ये हम लोग ने बहुत मेहनत से बनाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। इसमें कहा गया है अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स आ। तो ये क्या फॉर्म करते हैं ये आपको बताना है। तो पहली बात, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और साथ ही साथ सिमिलर स्ट्रक्चर है, इनका स्ट्रक्चर एक ही जैसा है और साथ ही साथ ये वर्क एक
साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेंगे, तो ये फॉर्म करेंगे एक टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू चैप्टर का नाम है, तो पहला क्वेश्चन इससे डेफिनेशन से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया है विच टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो एपिकल टिश्यू की बात करी जाए, लेटरल टिश्यू की बात करी जाए, इंटरकैलरी की बात करी जाए, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एग्जाम्पल्स होते हैं। परमानेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, स्क्वैमस भी नहीं है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है विच मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। तो ग्रोइंग टिप जो होती है स्टेम की, रूट्स की, उसमें कौन से मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं और ये करते क्या हैं, लेंथ जो स्टेम की होती है, रूट्स की होती है, वो इंक्रीज करते हैं। तो ये होते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो ए ऑप्शन ही इसका सही है। लेटरल गलत है, इंटरकैलरी भी गलत है और क्यूबोइडल भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया, फोर्थ में कहा गया है द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच मेरिस्टेम। देखिए जो स्टेम की गर्थ होती है, ठीक है, या रूट की जो गर्थ होती है, वो किसकी वजह से इंक्रीज होती है, किस मेरिस्टेम की प्रेजेंस से इंक्रीज होती है, तो ये होती है लेटरल मेरिस्टेम से इंक्रीज। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में देखिए, इसमें कहा गया नेम द मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात करी गई है बेस ऑफ लीव की, और साथ ही साथ इंटरनोड्स की बात करी गई है। जो ट्विग्स का इंटरनोड्स होता है उसमें कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। तो फिफ्थ का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स। तो जो ब्लड हो गया, फ्लोएम हो गया, मसल्स हो गया, तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ए ऑप्शन सेल के एग्जाम्पल है, गलत है। बी ऑप्शन ऑर्गन है, भी गलत है। सी ऑप्शन नर्व्स भी गलत है। इसमें डी ऑप्शन जो टिश्यू है यही सही है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लोएम देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, मसल मस्कुलर टिश्यू होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 पैरेनकाइमा टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड। तो देखिए पैरेनकाइमा का पहले फंक्शन दिया गया, क्या फंक्शन है कि ये प्लांट को सपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ फूड को स्टोर कर रहा है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में क्या होता है कि पैरेनकाइमा क्लोरोफिल अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जब ये क्लोरोफिल स्टोर करेगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, तब बताना है इस पैरेनकाइमा को क्या कहते हैं, तो तब इसको कहेंगे हम लोग क्लोरेनकाइमा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या कहा गया, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू विच परमानेंट टिश्यू। तो किस परमानेंट टिश्यू की वजह से प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन इज कॉलिनकाइमा, बी ऑप्शन इज एरेनकाइमा, सी ऑप्शन इज क्लोरेनकाइमा एंड डी ऑप्शन इज स्केलेनकाइमा। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो हमारे पास टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है परमानेंट टिश्यू, उसका नाम है कॉलिनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया नेम द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। तो प्लांट को हार्ड करने में और प्लांट को स्टिफ बनाने में कौन सा टिश्यू मदद करेगा, तो स्केलेनकाइमा मदद करेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कोकोनट की जो हस्क होती है, आपने कोकोनट देखा होगा, इसके ऊपर आप देखेंगे तो हस्क लगी हुई होती है जिसको बहुत टफ होता है निकालना। ठीक है, डेड सेल्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हस्क किसकी बनी होती है, हस्क बनी होती है किसकी, स्केलेनकाइमा की। तो डी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा, दैट इज स्केलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे उससे पहले कुछ स्केलेनकाइमा के बारे में बातें दी गई हैं, उसको देख लेते हैं। तो स्केलेनकाइमा में जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। दूसरी बात, सेल्स लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं, और साथ ही साथ जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं लिग्निन की वजह से। लिग्निन प्रेजेंट होता है, और लिग्निन क्या करता है, लिग्निन एक ये क्या समझ सकते हैं केमिकल सब्सटेंस है, ये इसको थिक बना देता है वॉल्स को। ठीक है, किसकी वॉल्स को, स्केलेनकाइमा टिश्यू की वॉल्स को। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स, कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टेम्स में प्रेजेंट होती है, वैस्कुलर बॉडी बंडल्स के आसपास जो इर्द गिर्द पूरे में सर्कमफ्रेंस में प्रेजेंट होती हैं। वेन्स ऑफ लीफ, आपने लीफ देखी होगी, तो लीफ की वेन्स में भी ये प्रेजेंट होती हैं, जैसे ये है, तो ये जो दिखाई पड़ रही है ये वेन है लीफ की। ठीक है, तो इसमें भी प्रेजेंट होती है। और साथ ही साथ जो हार्ड कवरिंग होती है सीड्स के और नट्स में, उसमें भी स्केलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया नेम द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। तो लीफ की एपिडर्मिस में कौन सा मतलब जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस ऑफ लीफ में, उसको कहते क्या है। स्ट्रोमा गलत है, स्टोमेटा इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन जो है स्टोमेटा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय हाउ मैनी किडनी शेप सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। तो कितने किडनी शेप सेल्स क्या करते हैं, स्टोमेटा को इनक्लोज करते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा अगर देखें तो देखिए कैसा बना हुआ होता है, ये किडनी शेप सेल्स हो गया, ये दूसरा किडनी सेल हो गया, ये जो आपको स्पेस दिखाई पड़ रहा है इसको बोला जाता है स्टोमेटा। ठीक है, यह स्टोमेटल पोर स्टोमेटा है,
और आप देख सकते हैं एक किडनी शेप सेल ये हो जाएगा, दूसरा किडनी शेप सेल ये हो जाएगा। तो 2 किडनी शेप सेल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका आंसर 2 है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यू वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। देखिए टिश्यू जो होते हैं, प्लांट टिश्यू जो होते हैं, डिवाइडिंग कैपेसिटी के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक है और दूसरा क्या है? परमानेंट है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। तो बिल्कुल सही बात है, जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो कुछ ही रीजन में होती है। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन में दिया गया दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दीज पोजिशंस। तो इन पोजिशंस पे क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या डिवाइडिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। और साथ ही साथ आपको ये समझना है कि ये जो असर्शन है, जो रीज़न है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का। तो इसमें ए ऑप्शन आप टिक करेंगे। ए ऑप्शन क्या कहता है? ही तो कहता है कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है दैट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15th क्वेश्चन में क्या कहा गया? इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज़ अ थिक वैक्स कोटिंग ऑफ विच केमिकल सब्सटेंस। तो देखिए, अगर डेजर्ट प्लांट आप देखेंगे तो इसमें पता होगा वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो वाटर लॉस को रोकने के लिए क्या होता है? इसमें एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है। अब आपको बताना है ये थिक वैक्सी कोटिंग किस सब्सटेंस की होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्यूटिन दिया गया है, यही ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सुबेरिन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये तो कॉर्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। विच टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो कौन से ऐसे टिश्यूज होते हैं जो एक से अधिक तरीके के सेल से बने हुए होते हैं? तो पहला सिंपल है, गलत है। परमानेंट गलत है। मेरिस्टेमेटिक भी गलत है। इसमें कौन सा सही है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ सच डैश टिश्यूज। तो कैसे टिश्यूज के एग्जाम्पल हैं जाइलम एंड फ्लोएम? तो जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में देखिए क्या कहा गया? व्हाट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर एंड वेसल्स। तो देखिए यहाँ पे 4 तरीके की सेल्स दी गई हैं। जाइलम सेल्स हैं ये। ट्रैकीड्स हो गई, वेसल्स हो गई, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, जाइलम फाइबर्स हो गए। तो ये कहाँ प्रेजेंट हैं? जाइलम में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। तो देखिए जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं आपको बताना है उनको कहते क्या हैं? करते ये हैं कि ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इनको ट्रैकीड्स भी कहा जाएगा, वेसल्स भी कहा जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, दैट इज ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में कहा गया द डैश स्टोर्स फूड। तो फूड के स्टोरेज में कौन मदद करेगा? पैरेन्काइमा मदद करेगा। और साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर में भी पैरेन्काइमा मदद करेगा। लेकिन अगर देखा जाए सपोर्टिव फंक्शन में कौन सपोर्ट कौन करता है प्लांट्स को? तो सपोर्ट में मदद करता है फाइबर्स। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में देखिए क्या कहा गया? फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो जो फ्लोएम है वो भी 4 तरीके के एलिमेंट से बना हुआ होता है। पहला सीव ट्यूब्स है, सही है। दूसरा कंपेनियन सेल्स है, सही है। थर्ड फ्लोएम फाइबर्स है, ये भी ठीक है। और चौथा है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो बिल्कुल सही ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें देखिए कंसीडर द 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट है सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स। तो बिल्कुल सही बात कही गई है। देखिए जो सीव ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, इनकी वॉल जो होती है वो परफोरेटेड होती है और साथ ही साथ ये ट्यूब के शेप में होते हैं। बिल्कुल सही है। परफोरेटेड का मतलब छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होंगे। पहला स्टेटमेंट सही है। बी ऑप्शन देखिए, इसमें कहा गया फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम। तो फ्लोएम जो है वो जाइलम की तरह नहीं होता। क्या डिफरेंस है? फ्लोएम में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मटेरियल होता है वो दोनों डायरेक्शंस में मूव करता है। जाइलम में जो मोशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है पार्टिकल्स का। तो 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसमें बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो लीव से प्लांट तक फूड को पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो फ्लोएम करेगा। तो इसमें बी ऑप्शन इसमें भी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। अब बताना है डेड सेल किस में होता है? सीव ट्यूब्स। 24th क्वेश्चन में अगर देखें तो पहला ऑप्शन दिया गया है सीव ट्यूब्स, गलत है, लिविंग सेल है। कंपेनियन सेल भी गलत है, लिविंग सेल है। फ्लोएम फाइबर इज द करेक्ट आंसर है, डेड सेल का होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें कहा गया ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल विच गैस। तो कौन सी गैस इनहेल करते हैं हम लोग ब्रीदिंग के टाइम पे? नाइट्रोजन गलत है, ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा।
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गलत है, हीलियम भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू लिवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। देखिए ये क्या करता है, वेस्ट को कलेक्ट करता है। कोई किसी के बारे में बात हो रही है, ये क्या करेगा, वेस्ट को कलेक्ट करेगा बॉडी से, हर पार्ट बॉडी से, और साथ ही साथ वो फिर लिवर और किडनी तक उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, जिससे वो डिस्पोज ऑफ हो जाए वेस्ट पार्टिकल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी गई, क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो टिश्यू मिलते हैं वो ब्लड और मसल्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों टिश्यूज़ हैं, बिल्कुल सही बात है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, मसल एक मस्कुलर टिश्यू है, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ये कैसे टिश्यूज़ हैं। तो एपिथेलियल की बात करी जाए, ये भी एनिमल में होता है, कनेक्टिव भी एनिमल में है, मस्कुलर भी एनिमल में हो, नर्वस भी एनिमल में ही है। तो एनिमल टिश्यू इसका सही आंसर होगा। एपिथेलियल टिश्यू से स्किन बनती है, ठीक है, अब लेयर बनती है ऊपर की। अगर कनेक्टिव टिश्यू, ग्लैंड्स भी बनती हैं। कनेक्टिव टिश्यू की बात करी जाए तो कनेक्टिव टिश्यू में ऐसे ब्लड हो जाएगा, बोन्स हो जाएंगे, लिगामेंट्स हो जाएगा। मस्कुलर टिश्यू में मसल्स हो जाएंगे, और नर्वस टिश्यू में जो नर्वस सिस्टम हमारा है, ब्रेन है, ये सब चीज़ें हैं, ये नर्वस टिश्यू से बनती हैं। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज़ एनिमल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो ब्लड है, तो सी ऑप्शन इसमें सही है, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, न्यूरॉन जो है ये फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, ब्रेन की। नेफ्रॉन जो है ये फंक्शनल यूनिट किसकी होती है, किडनी की। बोन्स भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज एनिमल बॉडी आर। देखिए जो कवरिंग होती है और जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं एनिमल बॉडी में, उनको क्या कहते हैं, तो वो बने होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इसमें कहा गया, ईसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ आर कवर्ड विद डैश एपिथेलियम। तो कौन से एपिथेलियम से बने हुए होते हैं, ईसोफेगस और लाइनिंग ऑफ माउथ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अगर इनकी बात अगर करी जाए तो ये बने हुए होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम के, तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन 32 देखिए, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो देखिए किडनी ट्यूब्यूल्स की बात करी जाए, सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट की बात करी जाए, तो किस एपिथेलियम के बने होते हैं ये आपको बताना है। तो कॉलमनर एपिथेलियम गलत है, स्क्वैमस भी गलत है, इसका आंसर क्या होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 33 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। कौन कनेक्टिव टिश्यू इसमें नहीं है। ए ऑप्शन एरियोलर टिश्यू दिया गया, बी ऑप्शन एडिपोज दिया गया, सी ऑप्शन कॉम्पैक्ट दिया गया, एंड डी ऑप्शन इज हाइलाइन टिश्यू। ठीक है, तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू इसमें नहीं है, तो कॉम्पैक्ट टिश्यू इसमें सही आंसर होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। 34th में कहा गया, ब्लड हैज़ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। बिल्कुल सही बात है, ब्लड में प्लाज्मा होता है। ठीक है, और इस प्लाज्मा में क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होती है, इसी में सस्पेंडेड होती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। तो थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे डैश होना चाहिए। तो प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, सॉल्ट भी होता है, हॉर्मोन्स भी होते हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बोन्स। तो बोन्स से रिलेटेड कौन सी बात इनकरेक्ट है, तो पहली बात दी गई, बोन्स इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सही है। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी, ये भी सही है। थर्ड में दिया गया, इट ऑल्सो एंकर्स द मसल एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये भी सही है। गलत कौन सा है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल थोड़ी ना होते हैं, ये कैसे होते हैं, तो बोन्स आर नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, तो नॉन फ्लेक्सिबल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ डैश कंपाउंड्स। तो जो बोन सेल्स होती हैं कौन से कंपाउंड्स की बनी होती हैं, हार्ड मैट्रिक्स होती हैं, किस कंपाउंड की बनी होती है, कैल्शियम की भी होती हैं, फॉस्फोरस की भी होती हैं, तो इसका आंसर डी होगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। 38 देखिए, इसमें कहा गया, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड। देखिए दो बोन्स को कनेक्ट करने के लिए जो टिश्यू होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है लिगामेंट्स। ठीक है, बोन्स को कनेक्ट, दो बोन्स को कनेक्ट करता है कौन, लिगामेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, व्हाट कनेक्ट्स मसल टू बोन। अब मसल्स को बोन से कौन कनेक्ट करेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो मसल को बोन से कनेक्ट करता है टेंडन्स। तो इसके लिए वर्ड याद रखिएगा, MTB। ठीक है, MTB याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। M का मतलब होता है मसल्स, T का मतलब होता है टेंडन्स, B का मतलब है बोन्स। तो मसल को बोन से कौन कनेक्ट कर रहा है, टेंडन्स कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट,
विच टिश्यू इज़ फैट स्टोरिंग टिश्यू, तो फैट को स्टोर करने वाला टिश्यू जो है वो कौन सा है। और साथ ही साथ इसके बारे में एक और चीज़ जान लीजिए, ये स्किन के नीचे पाया जाता है और साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। एडिपोज टिश्यूज़ आर फिल्ड विद डैश ग्लोब्यूल्स, तो किसके ग्लोब्यूल से भरे हुए होते हैं और ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ये फैट्स ग्लोब्यूल से भरे हुए होते हैं और इसीलिए ये इंसुलेटर की तरह बिहेव भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब रॉन्ग है। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सेकंड में दिया गया दिस टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, मस्कुलर टिश्यू, बिल्कुल सही है। मस्कुलर टिश्यू की बात हो रही है तो मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी मदद करते हैं, बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। थर्ड में दिया गया मसल प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू, तो जब हम लोग उसको मूव कराना चाहते हैं तब वो मूव करते हैं। एंड स्टॉप व्हेन वी डिसाइड दे आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, तो वॉलंटरी मसल की प्रॉपर्टीज़ दी गई है, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं ऐसे मसल्स को क्या कहते हैं, वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते ऐसे मसल्स को क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं, जैसे कार्डियक मसल्स हैं। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन होगा सही, क्योंकि इसमें कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मसल फाइबर, इसमें कौन सा मसल फाइबर नहीं है। तो स्ट्राइएटेड मसल होते हैं, स्मूथ मसल भी होते हैं, कार्डियक मसल भी होते हैं, मसल फाइबर में मेरिस्टम नहीं होते, तो प्लांट टिश्यू है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट मसल सेल्स। अब यहाँ पे देख लीजिए हार्ट मसल सेल्स के बारे में थोड़ी सी बातें करी गई हैं कि हार्ट मसल सेल्स कैसी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और यूनी न्यूक्लियड, मतलब एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये हार्ट मसल की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। नेम द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू की सेल्स का नाम आपको बताना है, तो न्यूरॉन्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेफ्रॉन किडनी की होती है, लिगामेंट्स और टेंडन्स तो अलग ही, अभी हमने आपको बताया। 45 में दिया गया सिलेंड्रिकल मसल फाइबर्स विच शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। ठीक है, सिलेंड्रिकल होती हैं और साथ ही साथ अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट हुए होते हैं। ये किस में होते हैं ये आपको बताना है। तो 45 में अगर देखा जाए स्मूथ मसल्स गलत है, कार्डियक मसल्स भी गलत है, इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मोस्ट अबंडेंट एनिमल टिश्यू, तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो एनिमल टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको कौन सा टिश्यू कहते हैं। तो एपिथीलियम इसका सही आंसर होगा। तो 46 क्वेश्चन का जो आंसर है, एक मिनट, 46 का ऑप्शन नंबर ए एपिथीलियम नहीं होगा, एपिथीलियम नहीं है, मस्कुलर भी नहीं है, इसका सही आंसर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एपिथीलियम क्या करते हैं, तो लेयर बनाते हैं, ऊपर की जो लेयर होती है हमारी स्किन की और इन सब चीज़ों की, वो एपिथीलियम की बनी हुई होती है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर, अब ये जो टेंडन्स हो गए, अभी हमने बताया था टेंडन क्या करते हैं, मसल और बोन्स को कनेक्ट करते हैं, लिगामेंट्स बोन्स और बोन्स को कनेक्ट करते हैं, ये होते क्या है पूछा गया है। तो 47 ये कनेक्टिव टिश्यू है तो सबको पता है, लेकिन कैसे कनेक्टिव टिश्यू हैं, दे आर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, लिगामेंट इज़ वेरी इलास्टिक। अब जो लिगामेंट होता है बहुत इलास्टिक होता है, क्यों इलास्टिक होता है आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिए गए इट अटैचेस बोन टू बोन, गलत है। इट इज़ डेंसली पैक्ड, गलत है, अगर डेंसली पैक होगा तो बहुत ज़्यादा इलास्टिक नहीं होगा। इट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स, तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही दिया गया है। क्वेश्चन 49 देखिए, 49 में क्या कहा गया, विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड्स, तो कौन से ऐसे टिश्यू हैं जो ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ए ऑप्शन इज कनेक्टिव टिश्यू, गलत, बी ऑप्शन एपिथेलियल टिश्यू, यही ऑप्शन जो है ये सही है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लैंड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, ये अच्छे क्वेश्चंस आ गए, थोड़े से वैसे क्वेश्चंस आ गए जो बाकी आपको किताब में मिल जाएंगे। ठीक है, प्लाज्मा कंटेन्स, प्लाज्मा कंटेंट ऑफ ब्लड इज, तो ब्लड में प्लाज्मा का कंटेंट कितना होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसमें जो प्लाज्मा का कंटेंट होता है ब्लड में वो अप्रॉक्सीमेटली 55% होता है, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, शॉर्ट ब्रांच्ड प्रोसेस कमिंग आउट ऑफ न्यूरॉन, तो प्रोसेस नहीं होगा, प्रोजेक्शंस होगा। ठीक है, आपने देखो कि शॉर्ट ब्रांचेस निकली हुई होती हैं न्यूरॉन्स में से, उसको कहते क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उनको कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू एक्ट्स लाइक इंसुलेटर, तो इंसुलेटर की तरह कौन सा टिश्यू बिहेव कर रहा था, इसमें फैट प्रेजेंट थे। ठीक है, और वो कौन सा था, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू था।
ठीक है, एडिपोज की बात करी जाए, एडिपोज टिश्यू की बात करी जाए तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट पूछी गई है, बहुत सिंपल है। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या हो जाएगी, नर्वस है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। अगर किडनी की फंक्शनल यूनिट पूछी जाती तो वो होती नेफ्रॉन। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे सेल बॉडी और ये जो साइटॉन दिया गया पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू सीव ट्यूब्स। अब देखिए सीव ट्यूब्स जो होते हैं इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किसका है, तो ये फ्लोएम फाइबर का है, तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल टिश्यू। यहाँ पे सिंपल टिश्यू कौन सा नहीं है, तो पैरेनकाइमा सिंपल है, कॉलेनकाइमा सिंपल है, स्केलेनकाइमा भी सिंपल है, क्लोरेनकाइमा होता है, एरेनकाइमा होता है, सारे के सारे सिंपल टिश्यूज, मतलब जिसमें काइमा लगा हुआ होता है वो सिंपल टिश्यूज होते हैं। फ्लोएम जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57 देखिए, 56 होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, गलती से 57 पड़ गया है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया है 57 में स्केलेटल मसल्स आर। तो स्केलेटल मसल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट दिया गया है स्ट्राइएटेड एंड वॉलेंट्री, सेकंड दिया गया है अनस्ट्राइएटेड एंड वॉलेंट्री, थर्ड दिया गया है स्ट्राइएटेड एंड इनवॉलेंट्री, और फोर्थ दिया गया है अनस्ट्राइएटेड एंड इनवॉलेंट्री। ठीक है, सेल्स डेड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, लिग्निन प्रेजेंट होता है, भी हमने आपको बताया था। तो ये आंसर तो आपको पता ही होगा, स्केलेनकाइमा इज द करेक्ट आंसर। 59 देखिए, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर टाइप्स ऑफ। तो ये सब क्या है, तो ये मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कनेक्टिव टिश्यू था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें आंसर जो होगा दैट विल बी फाइब्रस टिश्यू। तो फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं, तो फाइब्रस टिश्यू इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए बात करी गई ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की, नर्व्स की, ये किससे कंपोज होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू गलत है, नर्वस टिश्यू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तीनों कहीं ना कहीं ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग नर्वस टिश्यू के अंदर इंक्लूड करेंगे, तो सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन एक्वाटिक प्लांट्स लार्ज कैविटीज ऑफ लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट। आपको पता होगा एक्वाटिक प्लांट्स में बहुत बड़ी बड़ी कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, पैरेनकाइमा में, और ये क्या प्रोवाइड करती हैं, बॉयंसी प्रोवाइड करती हैं प्लांट को, जिससे प्लांट क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है। इन पैरेनकाइमा को कहते क्या है, पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्लोरेनकाइमा गलत है, कॉलेनकाइमा भी गलत है, एरेनकाइमा इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एरेनकाइमा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कार्टिलेज। कार्टिलेज से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर गलत है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन दिया गया है, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज इज वाइडली स्पेस सेल्स, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की बात करी गई है कि एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और इनमें वाइडली स्पेस सेल्स होती हैं, मतलब जो सेल्स होती हैं उनमें स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, सही है। सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड शुगर्स। तो यही देखिए ऑप्शन गलत है, यहाँ पे विटामिन नहीं होना चाहिए। कार्टिलेज में जो सॉलिड मैट्रिक्स होती है वो प्रोटीन और शुगर की बनी हुई होती है, ठीक है, तो यही ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका गलत है। सी ऑप्शन देख लीजिए, कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज, ईयर्स, ट्रैकिया एंड लैंग्स, बिल्कुल सही है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स, हम लोग अगर ईयर्स की कार्टिलेज को फोल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी बोन्स की जो बोन्स को बेंड नहीं कर सकते, ठीक है, वो तो बहुत हार्ड होती है ना, उसको बेंड नहीं कर सकते। दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब कौन सा गलत है, सिर्फ बी ऑप्शन गलत है। 63 देख लीजिए, 63 में क्या कहा जा रहा है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट टेक प्लेस बाय डैश ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल्स। तो जो बॉडी पार्ट का मूवमेंट होता है वो किस वजह से होता है, तो बाय कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन से होता है, ठीक है। तो जो सेल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं, एक्सपैंड करती है, और इसी वजह से बॉडी पार्ट क्या करते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, एक्सचेंजिंग गैस विद द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही है। ट्रांसपीरेशन बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों बातें होती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए बहुत जल्दी इसको खत्म करेंगे, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं।
पहले में देखिए क्या कहा गया, डैश इज लोकेटेड इन बिटवीन द रीजन्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज और एट द बेस ऑफ लीव्स एंड कंट्रीब्यूट्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट में कौन मदद करेगा, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर ये हो जाएगा इंटर कैलरी मेरिस्टेम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, डैश प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट एंड एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड सीड्स एंड नट्स। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा, अभी आपको सीड और नट की बात करी गई थी। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह स्केलेरन काइमा, ठीक है, स्केलेरन काइमा जो है SCLERENCHYMA, ठीक है, स्केलेरन काइमा जो है ये मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड डैश इज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कॉर्क। तो कॉर्क की वॉल्स में जो प्रेजेंट होता है और इस क्या करता है, इसको इम्परवियस बनाता है गैस और वाटर में, तो इसको कहते हैं सुबेरिन। ठीक है, तो सुबेरिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, द टिश्यू दैट रेगुलेट्स एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज वेल एज बिटवीन वेरियस बॉडी पार्ट इज। तो ऐसा टिश्यू जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने, मटेरियल को एक्सचेंज करने में मदद करेगा, उसको क्या कहेंगे, तो दे आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू इसका सही आंसर होगा। तो एपिथेलियल टिश्यू का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये बहुत पार्ट्स तक ये कह सकते हैं मटेरियल को एक्सचेंज करने में मदद कर रहा है बॉडी में। ठीक है, बाहर निकालने में, अंदर डालने में मदद करता है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट हमारा आखिरी सवाल है, इसमें कहा गया डैश इज़ अ फैट रिजर्वायर हैविंग सेल्स फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स एंड इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। तो अभी हम लोग ने देखा था दिस इज एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर एडिपोज टिश्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन जो 65 क्वेश्चंस थे अप्रॉक्सीमेटली, ये होते हैं समाप्त। ठीक है, अगर आपने इतने क्वेश्चंस को सही से पढ़ा है तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी हमारी पहली प्लेलिस्ट भी है 60 क्वेश्चंस की, तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस कर लिए और ये 100 क्वेश्चंस में से ही आपसे क्वेश्चन MCQ के पूछे जाएंगे, चाहे कोई भी पेपर आपका टिश्यू चैप्टर का होगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। Which of the following is the largest organ in the human body? Your options are heart, liver, brain, and skin. And the correct answer is skin. The skin is the body's largest organ, serving various functions that includes protection, temperature regulations, and sensations, etc. The second question, what is the primary function of red blood cells, WBCs, which are also known as erythrocytes? Your options are immune defense, oxygen transport, hormone production, or digestion. The right answer of this question is B, and that is oxygen transport. Red blood cells are responsible for transporting oxygen from the lungs to body's tissues and organs. The third question, which of the following hormones is produced by the thyroid gland and regulates metabolism? Your options are insulin, estrogen, thyroxine, T4, or adrenaline. The correct answer is thyroxine. Thyroxine produced by the thyroid gland plays a central role in regulating metabolism. Question number 4. What is the primary function of the alveoli in the lungs? Your options are oxygen exchange, filtration of air, voice production, or food digestion. The right answer is A, and that is oxygen exchange. Alveoli are responsible for exchange of oxygen and carbon dioxide during respiration. Question number 5. Which of the following is not a primary tissue type in the human body? Your options are epithelial, connective, muscular, or
neuronal? The correct answer is neuronal. Neuronal is a tissue that is a kind of subtype connective tissue. The primary tissue types are epithelial, connective, muscular, and nervous. So the neuronal is a tissue which is a subtype of connectivity tissue. The question number 6. What part of the brain is responsible for regulating basic bodily functions like breathing and heart rate? Your options are cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, hypothalamus. And the correct answer is medulla oblongata. Medulla oblongata located in the brainstem that regulates essential functions such as breathing and heart rate. Let's move on to the question number 7. Friends, if this video is helping you, then please comment and share your views. Your comment, your subscriptions help me to understand that I'm doing good content. Let's continue. What is the main function of the urinary system? Your options are blood circulation, digestion, excretion of waste product, or sensory perception. The right answer is C, and that is excretion of waste products. The urinary system primarily excretes waste products from the bloodstream as urine. Question number 8. Which hormone is responsible for regulating blood sugar levels in the human body? Options are insulin, estrogen, testosterone, or thyroxine. And the correct answer is insulin. Insulin produced by the pancreas that regulates blood sugar level by promoting glucose uptake into the cells. Question number 9. What part of the digestive system is responsible for absorbing the most nutrients from the food? Your options are stomach, small intestine, large intestine, or esophagus. The correct answer B, and that is small intestine. The small intestine is where the majority of the nutrient absorption takes place in the digestive system. Now question number 10. What is the primary function of the lymphatic system? Options are transport of oxygen, immune defense, digestion of food, regulation of body temperature. The correct answer B, and that is immune defense. The lymphatic system is primarily responsible for immune defense, including white blood cell production and pathogen removal. Question number 11. Which gland is often referred as the master gland because it controls many other endocrine glands in the body? So which is that gland? Your options are thyroid gland, adrenal gland, pituitary gland, or pancreas. And the right answer is pituitary gland. Pituitary gland in the brain controls several other endocrine glands, earning in the nickname that is called master gland. Question number 12. What is the primary function of the spleen in the human body? Your options are blood filtration, digestion, hormone production, or muscle contraction. The correct answer is blood filtration. The spleen functions as blood filtration organ that removes damaged blood cells and pathogens. Question number 13. Which part of the human eye is responsible for bending and focusing light onto the retina? Options are cornea, lens, retina, or sclera. The right answer is lens. The lens of the eye bends and focuses light onto the retina.
that enables clear vision. Question number 14. What is the primary function of the skeletal system? Options are blood circulation, movement, digestion, or vision. The right answer is movement. The skeletal system provides support and enables body to have movements. Question number 15. What is the main function of the respiratory system? Your options are blood filtration, food digestion, gas exchange, or muscle coordination. The correct answer is gas exchange. The primary function of the respiratory system is to facilitate the gas exchange of oxygen and carbon dioxide. Question number 16. Which type of muscle is under voluntary control? Options are cardiac muscle, smooth muscle, skeletal muscle, involuntary muscle. And the right answer is skeletal muscle. Skeletal muscles are under voluntary control while cardiac and smooth muscles are involuntary. Question number 17. What is the function of white blood cells, leukocytes, in the human body? Options are oxygen transport, immune defense, digestion of the food, or blood clotting. The right answer is immune defense. White blood cells are primarily responsible for immune defense and fighting infections. Question number 18. Which of the following is not a component of the circulatory system? Your options are heart, blood vessels, lungs, or blood. The correct answer is lungs. The circulatory system includes the heart, blood vessels, and the blood, but the lungs are part of the respiratory system. Right? Now let's move on to the question number 19. What is the function of the pancreas in the human body? Your options are regulation of the blood sugar, oxygen transport, immune defense, or muscles contraction. The right answer is a regulation of blood sugar. The pancreas regulates blood sugar levels by producing insulin and glucagon. Question number 20. What is the primary function of the adrenal glands? Options are regulation of metabolism, blood filtration, fight or flight response, or temperature regulations. The correct answer is fight or flight response. The adrenal glands produce hormones involved in the body's response to the stress, the fight or flight response. Right? Question number 21. Friends, if this video is helping you, then please comment and share your views. Your comment, your subscriptions help me to understand that I'm doing good content. Let's continue. Which of the following organ is not a part of the digestive system? Your options are liver, lungs, stomach, or small intestine. The right answer is lungs. Lungs are part of the respiratory system, not the digestive system. Question number 22. What is the primary function of the esophagus in the human body? Your options are digestion of food, transport of air, transport of food from the mouth to the stomach, or immune defense. The right answer is transport of food from the mouth to the stomach. Friends, the esophagus' main function is to transport food from the mouth to the stomach. Question number 23. Which of the following is a hormone
that are responsible for the regulation of sleep-wake cycles? Options are insulin, melatonin, thyroxine, or estrogen. The right answer is melatonin. The melatonin is a hormone that regulates sleep-wake cycles and is produced by the pineal gland. Question number 24. What is the primary function of the gallbladder? Options are digestion of carbohydrates, storage of the bile, blood filtration, or immune defense. The right answer? Storage of bile. The gallbladder stores bile produced by the liver, which is released to aid in the digestion of fats. Question number 25. Which of the following is a part of the central nervous system, CNS? Options are spinal cord, peripheral nerves, somatic nervous system, or autonomic nervous system. The right answer is spinal cord. Spinal cord is the part of central nervous system that includes brain and the spinal cord. Question number 26. What is the function of the epiglottis in the human body? Options are regulation of body temperature, protection of the trachea, swallowing, production of gastric juices, or vision. The right answer is protection of the trachea during the swallowing. The question number 27. Which of the following is not a part of the male reproductive system? Options are testis, prostate gland, uterus, or epididymis. Options are uterus. The uterus is a part of female reproductive system. Question number 28. What is the primary function of the hypothalamus in the human body? Options are regulation of blood sugar levels, control of body temperature, regulation of the heart rate, or storage of nutrients. The right answer is control of body temperature. The hypothalamus plays a crucial role in the regulating body temperature among the other functions. Question number 29. Which of the following is not a function of the large intestine? Options are nutrient absorption, water absorption, formation of feces, or storage of undigested waste. Your answer is nutrient absorption. While the small intestine absorbs nutrients and the large intestine primary function include water absorptions and formation of feces. Question number 30. Which type of muscle is found in the walls of internal organs such as the stomach and intestine? Your options are skeletal muscle, cardiac muscle, smooth muscle, or voluntary muscle. The right answer is smooth muscle. The smooth muscle is found in the walls of internal organ and it is not under voluntary control. Question number 31. What part of the human ear is responsible for transmitting the sound vibration to the inner ear? Your options are eardrum, that is known as tympanic membranes, cochlea, vestibule, or auditory canal. Your right answer is eardrum, tympanic membranes. The eardrum vibrates in response to the sound and transmit these vibration to the inner ear. Question number 32. Which of the following is not a function of the liver? Options are detoxification, blood filtration,
metabolism of nutrients, or production of the bile? The right answer is blood filtration. While the liver has many functions, but blood filtration is primarily carried out by the kidneys. Question number 33. What is the function of the cornea in the human eye? Options are bending and focusing light, color vision, light absorption, hearing. And the right answer is bending and focusing light. The cornea helps to bend and focus light as it enters the eyes. Question number 34. What is the role of these semicircular canals in the human ear? Options are hearing, balance and spatial orientation, sound amplification, sound transmission. The correct answer is balance and spatial orientation. The semicircular canals are responsible for the detecting changes in the head position and maintaining balance. Question number 35. Friends, if this video is helping you, then please comment and share your views. Your comment, your subscriptions help me to understand that I'm doing good content. Let's continue. Which of the following is a function of the thymus gland? Options are regulation of blood sugar, immune system development, production of insulin, or regulation of the body temperature. Right answer is immune system development. The thymus gland is involved in the development of T lymphocytes and the immune system. Question number 36. Which of the following is not a function of the blood? The options are transportation of the oxygen and nutrients, immune defense, regulation of body temperature, digestion of food, or digestion of food. The correct answer is digestion of food. Blood is not responsible for the digestion of food. It is primarily transports oxygen, nutrients, and plays a role in the immune defense and temperature regulations. Question number 38. What is the primary function of the trachea in the human respiratory system? Oxygen exchange, filtration of air, voice production, or airways passage? The right answer is airway passage. The trachea serves as an airway passage for the exchange of oxygen and carbon dioxide. Question number 39. Which part of the human brain is responsible for higher cognitive functions that include reasoning and problem solving? Options are medulla oblongata, cerebellum, cerebrum, or hypothalamus. The right answer is cerebrum. The cerebrum is responsible for higher cognitive functions that includes reasoning and problem solving. Question number 40. What is the primary function of the adrenal medulla within the adrenal glands? Options are regulation of blood sugar, regulation of metabolism, secretion of stress hormones, or filtration of blood. The right answer is secretion of stress hormones. The adrenal medulla secretes stress hormones such as epinephrine and norepinephrine as a part of the body's stress response. Question number 41. What is the function of the Stauchian tube in the human ear? Your options are sound amplification, equalization of the air pressure, sound transmission, or hearing. The right answer is equalization of the air pressure. The Stauchian tube helps to equalize air pressure between the middle ear and environment. Question number 42. Which part of the brain is responsible for regulating hunger,
thirst, and body temperature? Your options are cerebellum, cerebrum, medulla oblongata, or hypothalamus. The right answer is hypothalamus. The hypothalamus regulates various essential functions that includes hunger, thirst, and body temperature. Question number 43. What is the primary function of the gallbladder in the digestive system? Your options are digestive carbohydrates, storage of the bile, blood filtration, production of gastric juices. The right answer is storage of bile. The gallbladder stores bile produced by the liver, which aids in the digestion of fats. Question number 44. Which of the following is not a component of the endocrine system? Your options are adrenal gland, thyroid gland, spleen, or pancreas. The right answer is spleen. The spleen is not a part of the endocrine system. It is involved in the blood filtration and immune functions. Question number 45. What is the function of semilunar valves in the heart? Options are preventing backflow of blood into the ventricles, controlling the heart rate, pumping blood to the lungs, or controlling blood pressure. The right answer is preventing backflow of blood into the ventricles. Semilunar valves prevent the backflow of blood from the arteries into the ventricles of the heart. Question number 46. What is the primary function of the spleen in the human body? Your options are blood filtration, digestion, hormone production, muscles contraction. Right answer is blood filtration. The spleen function as a blood filtration organs, removing damaged blood cells and pathogens. Question number 47. Which of the following hormones is produced by the pancreas and regulates blood sugar levels? Your options are glucagon, thyroxine, melatonin, estrogen. The right answer is glucagon. Glucagon produced by the pancreas raises blood sugar levels when needed. Question number 48. What is the primary function of the optic nerve in the human eye? Your options are color vision, transmit visual signal to the brain, adjust the shape of the lens, or controlling the pupil size. The right answer is transmitting the visual signals to the brain. The optic nerve transmits visual information from the retina to the brain for processing. Question number 49. Which part of the brain is responsible for coordinating voluntary muscles movements and balance? Your options are cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, or hypothalamus. The right answer is cerebellum. The cerebellum plays a key role in coordinating voluntary muscles movements and balance. Question number 50. What is the primary function of the pineal gland in the human body? Your options are regulation of blood pressure, production of insulin, regulation of sleep-wake cycles, immune system development. The right answer is regulation of sleep-wake cycles. The pineal gland produces melatonin, which helps regulate sleep-wake cycles.